चलो और पटाखा फोड़ने वाले हैं? चलो कुछ बोलने वाले हैं? हाँ सर बोलेंगे। बोल दो। It's all because of the blessings of the entire team of Country Club. Media was here right now, were very supportive right from the beginning. And I will come back to you on this, I think after the AV presentation is over. It's really a miracle that, a few companies only survived during this COVID times. And one of them is Country Club India Limited. Thanks to Siddharth, Varun and my entire team of Country Club around the country and outside also. We've played a very, very important and supportive role in making the company a zero-debt company, which is almost considered impossible actually when the COVID started. पूरे clubs बंद थे, hotels बंद थे, airports बंद थे, aircraft बंद थे. So at that particular point of time, we have decided to become zero-debt company, and we have closed entire debts of about close to 600 crores. And that's the reason why we are now bursting with fresh energy, new vision, and we are now able to focus on the future through the franchisee route and also through some other acquisitions. So this is just a beginning of another era, I will say, Country Club Part 2 era, which I think will be scripted in the history as one of the most beautifully managed, wonderfully delivered to the all the different parts of the community. And to be on the top 3 in the world is not at all a joke. We have struggled hard, and we have never said no to anything. And we are very fortunate, I would say. I will not take it as a credit. I will say we were very fortunate. God has been kind. So इसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा. So Bombay has been very kind to me. Bombay में फाइल लगाना बहुत मुश्किल था, हैदराबाद बेस्ड कंपनी. बट आप लोग मुझे सपोर्ट करें. मेरा ऑफिस सामने ही था. ऊपर से किया पार्क, ऊपर से मैं I used to show people how the construction used to come. That was about 15 years back. And look at us today. We are here, sitting here, and not talking about the gone last 15 years, and how we have expanded and how we have grown, and how again we are getting back to normal, and how we are again going to grow in a huge manner. Thank you again. I'll come back to you. Thank you once again. क्या बात है. Oh, nice. सर यहाँ देखिए. Sir, with this bouquet. In Sikkim. I was invited there, and we had signed a very special deal with a franchising property in the heart of Gangtok, and the government seemed to be very supportive. And believe it or not, it was one of my most beautiful experiences. The 3 days I spent there in Gangtok and part of Sikkim. I had also been to the Indo-China border, and I have seen exactly how. In those days, they scripted history, and it was one of the most beautiful moments, whether it is the climate, whether it is the rainfall, whether it is the thunder, it is the cloudburst, landslides. बहुत कुछ हुआ, but वो 3 दिन में I felt that this was much more beautiful than the countries I used to really like the New Zealand or Switzerland or Alaska.
I've been to all these places, but we are not able to understand that in our own country, अपने भारत देश में ही इतना beautiful places है बोल के. Only thing is they have not been properly promoted. If people go there and see, you will not believe India is such a beautiful and fertile and undiscovered territory, and it can be compared to any of the global destinations which I have personally visited. So I urge all the people, Country Club members, non-Country Club members, to visit these places and make sure that our tourism is also inbound, not only inbound but also, within the country itself. So tourism plays a very important role, as you know, in any economy, especially in a growing economy or a mature economy like India. We require to educate our people to travel within India also and try to learn the various cultures. The Sikkim culture was different. ये dress मैं वहीं खरीदा मैं. ये खरीद के मैं, in fact, I bought a lot of good mementos, and people are beautiful. अच्छे लोग आए हैं बहुत. And अभी तक वो खाली सिक्किम के बाहर नहीं निकले उन लोग. But I think it was really fascinating that that they are part of our beautiful country, and then we should all try to encourage them in their own pursuits. And just to share with you the yacht. This is the official symbol of Sikkim, yacht. This represents a very religious significance. It brings a lot of good luck to all the people, whoever has them, carry them in the houses. So, say hi to Yak. Hi. मैं तो लेके आने के बाद मेरा बिस्तर के बाद में आया कि I'm sleeping when I get up in the night. I look at that and it's such a बहुत beautiful feeling आता है अपने को कि we have got such beautiful things, such beautiful animals which convey so much of happiness, peace. नींद में भी वही आता. It's really surprising. In fact, my wife said, please take it out. But I said, no, you can leave the house, but I am not going to leave yet. So this is such an emotional moment for me. लोगों visit करके बात करके उनसे there are such beautiful people there. So I explained to my wife. So she said, next time we'll go together. I said, okay, it's a deal. So yeah, that brought us a lot of happy things together. Great memories from Sikkim and Gangtok. So this today is in honor of my visit, and our new card which we are celebrating. Opening is something I think a lot of members can make use of it. There is a special offer for the members, and for the new members, I think you can get a gold coin, and for the existing members, I think you have got different schemes. So I'm sure, I think it's going to be a big gold mine of memories of the Country Club. Country Club was built on memories and stands on memories. 35 years back, I started this place as a single entrepreneur. So, आप सोचिए अभी तक we are having 4 lakh members. So, it's more like a big community, and I will come back to you on this further while we are playing the Vechi. So, Understanding now how emotional he is right now, because it's been such a great achievement which we have achieved. Being debt free, and this surprise which and there are so many exclusive offers and exclusive things associated with this card. And during this monsoon, we have also launched Gold Mine membership card, which is definitely going to shower our members with gold. The details I'm going to provide you later. This moment is amazing. we can only show them. I have shown them Gangtok and this thing. You will see over a period of time, so many people will be visiting. We had, when we started in Bandipur Wildlife Resort,
not many people used to go because that particular point of time, Veerappan, a famous smuggler, was there. So people were scared, but we went ahead, Country Club, and built the project there. And today, a lot of people around the world come there. And though I have been to all the wildlife resorts in Africa, in Masai Mara and all that, I would still rate this, our project, Country Club Wildlife Bandipur, as one of the best wildlife projects in the world. So a lot of people from around the world, including Russia and all that, they come there and they have a tiger sighting and a leopard sighting, and it's really amazing actually how we have created. I would also like to thank Honorable Minister Renuka Chaudhary Garu, that time a good friend of mine. Now today morning we had his talk. So I mean, he was the Minister of Forests, and then we were really motivated by all the top leaders. When we visited Bangalore and we started, S.M. Krishna, the then Chief Minister, was really a big moral booster. He had invited us for a global ministers meet. That was very important. Apne Modi Sahab hai waqt, the Gujarat Chief Minister hai waqt, they had called Country Club for the global ministers meet. That is another feather in our cap. So आप सोचिए आप, because wherever we go, we add value to the economy, we give employment, and we are basically we are not exclusive, we are not 5-star. We are affordable, we are accessible, and we are very price friendly. That is the reason I think why we are successful, because we can fit into any budget, any kind of people, especially aspiring people and the new younger generation. And if you also look at our project at Kovalam, which is in Kerala, we have got a beautiful spa, floating spa. You find a lot of people again around the world visiting that. So these are all the facilities. What I am thinking is we may open up in the north and the northeast. In fact, I had a lot of discussions with some of senior officials in Sikkim, and they were all over to the idea of Country Club coming there. So we are going to create history in the north and the northeast, and I am sure, I think this is the beginning, and I am sure with this, your support, और सिक्किम में नया ब्रांच आपने लॉन्च की, दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या बोलना चाहते हैं जो बाकी मेंबर जुड़ना चाहे आपके साथ, क्या खास इस VIP मेंबरशिप में? for every new member, I think we are giving a gold coin, Country Club, and also for every person who introduces their friends or family, they are also getting a gold card. So I mean, it is like a big gold coin revolution. टोटल कितना ब्रांचेज हो गया इंडिया में, ऑल ओवर कितना ब्रांचेज है? We have got 51 branches, affiliate properties, and 31 properties. सिक्किम में जो न्यू ब्रांच खोला है, कहाँ पे खोले हैं, कौन सी लोकेशन पे खोले हैं, थोड़ा आप बताएं विस्तार से। Gangtok, in the heart of Gangtok. मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? गैंगटॉक के बीचों बीच, इन द हार्ट ऑफ गैंगटॉक हमने ये ब्रांच खोली है, एंड इट्स लाइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लोग वो जगह जो है वो एक्सप्लोर करें। इसीलिए ये सर ने पर्सनली विज़िट किया उस जगह को, वहाँ की जगह को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद इस नतीजे पे हम पहुँचे कि हमें ये अपने मेंबर्स तक पहुँचाना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाई वी लॉन्च दिस कार्ड। बेसिकली हमें आम जनता लोगों को बताना चाहिए VIP गोल्ड जो मेंबरशिप है क्या है, तो हमें बताएं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हमारी साइड से कार्ड लॉन्च हुआ है। जितने भी मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, अगर वो एक नया मेंबर हमारे क्लब को देते हैं तो उनको गोल्ड कॉइन उसकी जगह मिलेगा। तो एक तरीके से ना सोने की बारिश। 35 ईयर्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं कंट्री क्लब, ये तो हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। कितने साल चलाना, 51 ब्रांच, ये इतनी सारी जो खुशियाँ मिले एक साथ, ये आपके साथ कौन कौन जुड़े हैं जो शुरू से है, किसके? All the important banks in the country are also affiliated with the Country Club. Like our member banks are also supporting, because they have seen the future of the Country Club. हमारा track record है, and because of the track record and also because of the concept, it is affordable for the middle and upper middle classes, and also for the new aspiring classes. So I mean, it's a win-win situation for everybody, for the members, for the Country Club, and for the institutions who are supporting the brand. भारत सरकार का क्या सपोर्ट मिलता है? इतनी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर मिलने हिंदुस्तान के नाम रोशन कर रहे हो, गवर्नमेंट सरकार से, भारत से क्या आपका सपोर्ट मिला?
अभी तक I can't say specific support, but they have been quite kind. I mean, they have been very supportive wherever we go, whether it is in Karnataka, whether it is in Bandipur, whether it is in Kovalam, Kerala में. उसके लिए अभी now we are trying to concentrate in the north, northeast, these areas. Because these areas मैं आपको बोल रहा था ना, ये these are all virgin areas. People in the country don't know that there exists such beautiful places. So we are in the process of expanding our footprint in the north, northeast, around Himalayas also. So we are just waiting, maybe in the next coming 1 year or so, we will be having a lot more properties on this part of the country. कंट्री क्लब हर फैमिली की खुशी बन गए हैं, हर चाहे होली सेलिब्रेशन हो, चाहे दांडिया सेलिब्रेशन हो, एवरीथिंग हर मोमेंट में हर फैमिली के साथ रहता है. इतनी सारे आइडिया कहाँ से आते हैं कंट्री क्लब पर? Country Club में when I first became a member, शुरू से when I became a member of Second Club, which is a regimented club. Clubs, as you know, is the legacy left behind the British for the elite. And I thought, why not we open something with the Indian ethos? उसके लिए नवरात्रि, बैसाखी, होली, संक्रांति, रमज़ान, ईद, क्रिसमस पूरा मनाते हैं हम. And we do it along with the families. So like एक बात बोलूँ मैं आपको, KPS गिल साहब है ना, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब सुपर कॉप, उनको चीफ गेस्ट का बुलाया गया तो उन्होंने देखे हैदराबाद में 20,000 लोग डांस कर रहे थे. उन्होंने बोला दिस कैन नॉट हैपन इवन इन पंजाब. देयर वर मोर नंबर ऑफ नॉन पंजाबीज देन पंजाबीज इन लोहरी फेस्टिवल. सिमिलरली नवरात्रि फेस्टिवल में भी वी हैड गॉट कुमुद बिन जोशी, द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. So उन्होंने she was also very kind and she said, I mean, something amazing, you are getting people together. और एक भी किस्सा सुना तो मैं, नवरात्रि के टाइम पर बहुत यंगस्टर्स और बॉयज़ गर्ल्स they meet. So one incident I will tell you. One Dr. Rohit बोल के, एक close friend of mine, he came up and told me, God will bless you. I said, what doctor, what did I do that God should bless me? He said, 3 of my nieces and 4 of my nephews are getting married here. यहीं मिले, कंट्री क्लब में मिले, दांडिया में मिले और उनका शादी पक्का हो गया. अभी इससे बात मैं बोल रहा हूँ, इतना हैप्पी फीलिंग रहता हो. सर जो न्यू मेंबर जुड़ेंगे उनके लिए क्या क्या ऑफर दे रहे हो? न्यू मेंबर्स जो जुड़ेंगे उनको भी जो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी बाद में, उनको भी गोल्ड कॉइन हम देंगे. एंड इट डिपेंड्स, देयर आर फैक्टर्स और अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके चलते हम उनको ऑफर्स दे रहे हैं. ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नो आप कितने की मेंबरशिप लेते हैं और कैसे कैसे मेंबरशिप लेते हैं, ईयरली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, उसके हिसाब से वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. वो आपको पूरी लिस्ट बाद में मिल जाएगी. 15 अगस्त की क्या शुभकामनाएं रहेगी? 15 अगस्त की तो यही शुभकामनाएं रहेंगी कि मैंने जैसा पहले भी बोला कि सिर्फ एक दिन ही ये हमारे अंदर देशभक्ति नहीं जागनी चाहिए. ये देशभक्ति हमारे अंदर पूरे साल, हर वक्त, हर दिन, हर सेकंड रहनी चाहिए. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, क्योंकि 79th इंडिपेंडेंस डे है और आज तक हम आज़ाद हैं. एंड ऐसे ही आज़ाद आगे भी रहे, थॉट्स में भी, और बहुत फ़ख्र के साथ अपनी संस्कृति को अपनाएं, जो मैं आजकल देख रही हूँ कि लोगों में नहीं है. और मैं आपकी क्वेश्चन का भी आंसर करना चाहूँगी इस टाइम, जैसे कि आपने पूछा कि कितने टाइम से किसके आइडियाज़ आते हैं. ये हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो ये सारे आइडियाज़ फ्रेम करती है हर ओकेजन के लिए. एंड एक और चीज़ जो आपने सवाल पूछा था, कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे 35 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट करें, 35 ईयर्स वाले भी हमारे पास लोग हैं जो 35 साल से कंट्री क्लब के साथ जुड़े हुए हैं. तो आप समझ सकते हैं कि जड़ें कितनी ज़्यादा मजबूत हैं. और एनवायरनमेंट कंट्री क्लब का कैसा है कि लोग एक बार ज्वाइन करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं चाहते. हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, छोड़ना नहीं चाहते. सर आपसे पूछना था, जोश जुनून जो जज्बा आपके अंदर है, कहाँ से आते ऊर्जा इतनी सर, कहाँ से आती है? Well, I am lucky to be in this industry because this industry can give you happiness, health and fitness, and so many, it's a platform to meet like-minded people. So I mean, it's a very happy industry. So that is what keeps me going, and I will only say that I've been lucky to have started this industry and sustaining it for the last 35 years, and I'm sure I think it will go on like a legacy in a very big manner. सर अगर नवरात्रि की बात करें तो कंट्री क्लब का अलग ही नवरात्रि मूवी देखने को मिलता है. क्या खास प्लानिंग आप कर रहे हैं नवरात्रि में?
Different planning, different singers come, different stars come, and बहुत कुछ होता है, and lot of अब ये पूरा रोड ब्लॉक हो गया था. इनफैक्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर रोड इज ब्लॉक. दही हंडी आ रहे हैं सर, कुछ दिन बाद दही हंडी है, इसके लिए कितने आप लोग तैयारी कर रहे हैं दही हंडी के लिए? दही हांडी के लिए अभी जो प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू इट. दही हांडी ही नहीं, एक एक ओकेजन के लिए हम लोग करते हैं, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. क्योंकि जब भी हम आते हैं नवरात्रि में यहाँ प्रोग्राम है, काफ़ी सारे बॉलीवुड सितारे, टेलीविजन एक्टर, बड़े बड़े यहाँ पे इवेंट्स भी होता है. कंट्री क्लब बेसिकली मशहूर है बॉलीवुड के पार्टियों के लिए. बिल्कुल, बॉलीवुड की सिर्फ पार्टीज़ ही यहाँ पर नहीं होती हैं, लॉन्चेस सारे यहाँ पर होते हैं. बीट म्यूज़िक वीडियो, चाहे सीरियल हो, चाहे मूवी हो, चाहे कोई भी ओकेजन हो, उसका इवेंट कंट्री क्लब ने हमेशा विटनेस किया है. यहाँ के मेंबर्स को भी उसका पार्टिसिपेशन मिला है, और आगे भी ऐसा बहुत कुछ होने वाला है. एंड पास्ट में तो जैसा आपने देखा, बिग नेम्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, दे वर ऑल एसोसिएटेड विद कंट्री क्लब, एंड इन फ्यूचर सलमान खान परफॉर्म. यस, Salman Khan तो यहीं आ गए थे. फ्यूचर एज वेल. इनफैक्ट Salman Khan came on his motorcycle Yes. to the country club. जब country club शुरू हुआ. So we have got good memories. Shah Rukh Khan also came, and Shah Rukh Khan came little late. He said, "Hello, Mr. Thumbs Up Reddy." Sorry very about interesting late. incident. So like Vivek Oberoi, let Hema Malini ji perform करे. So a lot of almost most of the Bollywood stars have performed for the country club. बॉलीवुड में कौन से बेस्ट एक्टर है आपका जो आप लाइक करते हो? एक्टर्स कौन है जो आप लाइक करते हो? मेरे को like I like I mean everybody, but I think नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन? वैसा बोल के नहीं, not the South Indian. शाहरुख खान माय फेवरेट. सर इज कंफ्यूज बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ हीरो, तो मैं बता देती हूँ शाहरुख खान. आई जस्ट लव हिम. अच्छा, एनी मैसेज फॉर आम जनता के नाम और पब्लिक के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर? Enjoy life. We have only one life to lead, and live it to the fullest. Explore and be vibrant and be energetic, be lively. As a person, I like Salman Khan. Yeah. आ गया.